Good morning, students. In this video, I am going to explain the question answer chapter 16, that is electric current and its chemical effects. Fill in the blanks. The most liquids that conduct electricity are solution of dash, dash and dash. The answer is acids, bases and salts. That means ज़्यादातर लिक्विड जो कि ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो क्या है ना सॉल्यूशन है किसका ना एसिड्स का बेसिस का एंड सॉल्ट्स का. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश द कंसेंट्रेशन of an ion in the solution, the greater is the conductivity of the solution. The answer is greater. That means कोई भी solution में अगर उसका आयन का जो concentration है, that means number of ion वो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव बढ़ जाता है तो क्या होगा ना उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कैपेसिटी है वो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो कौन करते हैं ना आयंस करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कैन कॉज डैश इफेक्ट्स. Now, the passage of an electric current through a solution can cause chemical effect. कोई भी सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे क्या होगा ना उसमें केमिकल इफेक्ट दिखेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper gets deposited on the plate connected to the dash terminal of the battery. The answer is negative. That means करंट पास थ्रू किसके थ्रू करंट को पास किया जा रहा है ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर क्या होगा ना डिपॉजिट होगा एक प्लेट के ऊपर. वो प्लेट कौन सा टर्मिनल में अटैच रहेगा बैटरी का ना वो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्म के साथ कनेक्ट और अटैच्ड रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू डिपॉजिट अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर metallic object is known as dash. The answer is electroplating. एक प्रोसेस है इन विच इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाता है क्यों ना एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का थिन लेयर तैयार करने के लिए. इसको क्या बोला जाता है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Now the next question. The faster is the relative motion between the magnet and the closed coil. The dash is the current that flows through the coil. The answer is more. Then state true or false for the following statements. Question number 1. A solution of silver nitrate is a good electrolyte. Yes, the statement is true. Next question. An electrolytic cell consists of a cathode, anode and an electrolyte. The statement is true. Oxygen gets liberated at the anode during the electrolysis of acidified water. The statement is true. Now the next question. Electrorefining is the process of coating one metal on another using an electric current. The statement is false.
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं ना, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन was discovered by the Italian scientist Alessandro Volta. The statement is false. The next question, tick the correct option. The name of 4 electrolytes are given below. Number A, seawater, B, tap water, C, nitric acid, D, oxalic acid. Out of these, the weak electrolytes are the ones labeled as A and B, B and D, B and C, A and D. That means यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स दिया है 4, उनमें से एक पेयर बताना है जो कि ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, that is इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ, electrons only, positive as well as negative ions, the electrodes themselves. The correct option is positive as well as negative ions. That means electricity flow करते हैं ना ions. Now the next question, the electrode connected to the positive terminal of a battery is known as the anode, positive pole, cathode, electrofiner. The correct option is anode. कोई भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच रहेगा, कनेक्ट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे ना, एनोड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या ना, डिकम्पोजिशन टूट जाना, मतलब डिवीज़न हो जाना आयंस में, ओके, स्प्लिट हो जाना आयंस में, दैट इज डिकम्पोजिशन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट इज नोन एज कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, कोटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज electrolysis. Next question, the process of coating of iron with chromium is known as extraction, electroplating, electrolysis, electro-refining. The correct option is electroplating. कोई भी मेटल में और दूसरे मेटल का जो कोटिंग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Now the next question, answer the following questions in brief. Question number 1, state the appropriate term used for a liquid or solution which can conduct electricity along with some accompanying chemical changes. एक टर्म यूज करना है किसके लिए ना, जब कोई लिक्विड और सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उस सॉल्यूशन और लिक्विड में क्या होता है, सम केमिकल चेंजेस होता है ना। द आंसर इज अ लिक्विड और सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी along with some accompanying chemical changes is termed as electrolyte. वो लिक्विड और सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और जिसमें केमिकल चेंजेस भी होता है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट।
light. Distinguish between strong and weak electrolytes. Give 2 examples of each. First of all, strong electrolytes. Strong electrolytes are electrolytes that get ionized completely. Complete ionized होता है to form free mobile ions in the solution. Hence, a large number of free mobile ions are available in them to conduct electricity. Some of the example of strong electrolytes are sodium chloride NaCl, pure sulfuric acid H2SO4, and copper sulfate CuSO4. Now about weak electrolytes. Weak electrolytes are electrolytes that get ionized only partially. पूरी आयोनाइज नहीं होता है सॉल्यूशन में. पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जितना आना चाहिए उतना नहीं आते हैं. टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस. हेंस ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस आर अवेलेबल इन देम to conduct electricity. Some of the example of weak electrolytes are acetic acid CH3, COOH, ammonium hydroxide NH4OH, and tap water. Okay. Now the next question. Name the device that converts chemical energy into electrical energy. डिवाइस का नाम हम लोग को बताना है जो कि ना एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. कौन सा एनर्जी? ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते. सेल्स और बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आंसर. जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now next question. Name the scientists who introduced the scientific world to the number A. Voltaic cell. Answer. An Italian scientist Alessandro Volta in the year of 1790. Next question. B. Phenomena of electrolysis. The answer. British scientist Michael Faraday in the year of 1834. Now next question. Phenomena of electromagnetic induction. The answer. Michael Faraday and Joseph Henry are the true scientists introduced this phenomena. Question. An electrode A is connected to the positive terminal while electrode B connected to the negative terminal of a battery as shown in the diagram. Okay. Give the names of the electrode A and B. इलेक्ट्रोड A का क्या नाम है और इलेक्ट्रोड B का क्या नाम है? As the electrode A is connected to the positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं ना? उसको एनोड. Similarly, as the electrode B is connected to the negative terminal of the battery. नेगेटिव टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोड रहता है उसको क्या बोलते हैं ना?
cathode. So B is cathode. Now the next question. Name the process associated with the circuit shown here. The answer: chemical effects of electric current is the process associated with the circuit. Now the next question. Name the gases produced at A and B. Oxygen gas is produced at A and hydrogen gas is produced at B. Now the next question. State the meaning of the terms. First one, that is A, electromagnetic induction. Answer: electromagnetic induction, the phenomena in which electric current can be generated by a changing magnetic field, is known as electromagnetic induction. That means चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करके क्या कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं. ये जो घटना है इसको क्या बोलेंगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. All modern generators and transformers and generators are worked under the principle of electromagnetic induction. Electrolysis. Electrolysis refers to the chemical reaction which takes place only upon the passage of electric current through a solution. यह एग्जाम्पल है सच एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर yield हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ना, एक प्रोसेस है जो क्या बोलते हैं ना, जबकि कोई सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब उसमें क्या होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है. नाउ द टर्म इलेक्ट्रोड्स. Electrodes are the metallic or graphite rods found immersed in a cell. कौन सा रॉड हो सकता है, मेटालिक हो सकता है और ग्राफाइट. दैट मीन दोज हु कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. These electrodes connected to the positive and negative terminal of the battery to allow the free flow of charges. Next term, electro-refining of metals. It is the process of obtaining pure metal from the impure one by the process of electrolysis. That means electro-refining के द्वारा क्या करते हैं ना, impure metal से pure metal को separate कर सकते हैं. For example, in electro-refining of copper, a pure copper rod is made the cathode. प्योर जो कॉपर रॉड होगा उसको क्या करेंगे ना, कैथोड. दैट मीन्स नेगेटिव, बैटरी का जो नेगेटिव टर्म है उसको उसमें ऐड किया जाएगा. एंड द इम्प्योर कॉपर रॉड एज एनोड. दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल में किसको ऐड किया जाएगा, इम्प्योर कॉपर. विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्वेश्चन ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while sodium chloride solution conducts electricity. We know that free mobile ions allow the passage of electric current through the solution and making it conductive. Now, in case of solid state, sodium chloride does not exist in form of sodium and chloride ions. Hence,
does not conduct electricity, but when dissolved in water to form its solution, it undergoes ionization, forming free mobile ion, that is sodium and chloride ions, which then conduct the electricity. Now next question. It is not safe to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour. Answer. It is not safe to carry out electrical repairs outdoors during a heavy downpour because rainwater contains dissolved salt that can conduct electricity. The electrician can get electric shock while working outside in rain. So next question. To carry out the electrolysis of water, किसका ना water का, a few drops of sulfuric acid are added to the water. The answer, water is not a good conductor of electricity when a few drops of sulfuric acid is added to it, it became acidified. प्योर वाटर अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. जब इसको इसके साथ फ्यू ड्रॉप्स एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाएगा, क्या बन जाएगा ना, एसिडिफाइड हो जाएगा. देन वाटर मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएटेड इनटू H+ ion and OH- ions which conducts electricity. Therefore, to improve the electrical conductivity of water, a few drops of sulfuric acid H2SO4 are added into it. तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से क्या होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, किसमें ना, H+ आयन और OH- आयन. हम लोग जानते हैं कि आयन्स क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट, मोबाइल आयन्स जो है, फ्री आयन जो है, वो क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं. सो इट बिकेम कंडक्टर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर किचन गैस बर्नर्स coated with chromium? Answer. The kitchen gas burners are coated with chromium to improve the appearance by making the surface to shine and also to prevent them from any form of early corrosion. The question number 2. 3 electrolytic cells A, B, C are connected with identical bulbs in separate circuits as shown in the figure. Electrolytic cell A contains sodium chloride solution. Electrolytic cell B contains acetic acid solution. The electrolytic cell C contains distilled water. Question. In which setup will the bulb glow the brightest? In which setup will the glow of the bulb be quite dim? Next question. In which setup will the bulb not glow at all? Answer A. In setup A, the bulb will glow brightest because it contains sodium chloride, a strong electrolyte that is good conductor of electricity, and it allows the maximum current to pass through it, which is sufficient to glow the bulb brightest. Answer B. In setup B, the bulb will glow
the quite dim because it contains acetic acid, a weak electrolyte that is poor conductor of electricity, and it allows minimum current to pass through it. Answer C. In setup C, the bulb will not glow at all because it contains distilled water which is free from salt and unable to conduct electricity. Question number 3. Ramit sets up the circuit shown below for purification of copper. Question number A. Name the metals used for electrode A and B. Question number B. Name the process of purification. Question C. Name the solution that needs to be used. Now the answer: impure copper metal rod used for electrode A, that is anode. Pure copper metal rod is used for electrode B, that is cathode. Next, answer B. The process of purification is electro refining of metals. Next question का answer, that is copper sulfate CuSO4 solution needs to be used. Now the next question, define electroplating. How can steel spoons be plated with silver? Explain with the help of a diagram. Answer A. Electroplating is a process that involves the deposition of a thin layer of desired metal over another metal using electrical energy. In this process, the metal to be deposited is taken as anode and the metal on which the deposition is expected is taken as cathode. In electroplating silver over a steel spoon, a thin rod of pure silver is made anode by connecting it to the positive terminal of the battery, and the steel spoon is made cathode by connecting it to the negative terminal of the battery. The two are dipped in acidified solution of silver nitrate AgNO3 or silver chloride AgC. When the current is passed through the setup for short time only, a thin layer of silver deposits over the surface of a spoon. The three uses of electroplating. Three uses of electroplating are: articles of base metals are often coated with precious metals to make them look more attractive. Number 1. Number 2. Chromium plating on bathtubs, bicycle handles to provide shiny appearance and to avoid corrosion. Number 3. Artificial jewelry is often made by electroplating gold or silver on less expensive metals. Now question number 5. Describe an experiment to show that we can get electrical energy from magnetic energy. Take a hollow cylindrical coil with large number of turns per centimeter. Connect the two ends of the coil of
to the positive and negative terminals of the lamp. Now hold a strong bar magnet and bring it closer to the coil and observe as the magnet enters into the coil, the bulb glows, and again when the bar magnet is withdrawn from the coil, the bulb glows. क्या है ना, दिस इज सिलिंड्रिकल कॉइल, जिसमें क्या है ना बहुत सारा टर्न्स है पर सेंटीमीटर। कॉइल का जो टू एंड्स है, टू एंड्स को बल्ब का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा बार मैग्नेट। जब ये बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर किया जाएगा तब क्या होगा ना, बल्ब ग्लो करेगा। फिर बार मैग्नेट को विड्रॉन करेंगे, हटा लेंगे, क्या हो जाएगा, फिर बल्ब ग्लो करेगा। This shows that with non-uniform magnetic field we can gain electrical energy. Now the next question, a coil of insulated copper wire is connected to a torch bulb. What would happen if a bar magnet is, first one, pushed into the coil, pulled out the coil, kept stationary within the coil? Answer A. When the bar magnet is pushed into the coil, bulb glows momentarily with the generation of electromotive force and electric current. Answer B. When the magnet is pulled out the coil of the coil, bulb glows momentarily with the generation of electromotive force and electric current. Answer C. When the bar magnet is held stationary, there is no generation of electromotive force and electric current, therefore the bulb does not glow.